Welcome to another set of MCQ on absorption by roots for ICSE Biology by ICSE Biology Tutorials Smita ma'am. So first question is identify the process shown in the diagram. The process shown in the diagram is plasmolysis, and the second question is name the solution which is responsible for this process. The solution which is responsible for plasmolysis is to keep the cell in hypertonic solution. So here the correct answer is plasmolysis for this and hypertonic solution for part B. Now move to third question. Label part 1, 2, 3. This is very important question and this is very expected to do mistake. So first part is cell wall, कोई doubt ही नहीं है. यहाँ पर हमें पार्ट सी में सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, जो बिल्कुल गलत है, इसको जो आप हटाई दीजिए. नाउ देयर कुड बी अ डाउट ऑन पार्ट 2 whether it is a cell membrane or a hypertonic solution. Okay, and in part 3 there are the two condition. Part 3 हमें प्लास्टिड लग रहा है या न्यूक्लियस. आपको पता होना चाहिए इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज ऑन पेरिफेरी, सो दिस पार्ट इज न्यूक्लियस and these are plastid or chloroplast. So our B option is also incorrect. Now we have first part cell wall, second part is cell membrane, 2 is not cell membrane. D में देखिए first part is cell wall, second is hypertonic solution, yes it is a hypertonic solution, and third is plastid. Because cell wall is freely permeable, so it allow all the sugar solution or hypertonic solution to enter. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होता है? इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नेम द स्ट्रक्चर हियर एक्ट एज अ SPM, that is a semi permeable membrane. It is cell membrane. So here the correct answer for fourth is A, and for third is also, for third is it is D. Now next question is, what would you do to bring this cell back to its original condition? If you want to do deplasmolysis, then you need to keep the cell in water. It could be a hypotonic solution, because hypotonic solution means there is a less quantity of solute and more quantity of water. It could placed in pure water, that is also a correct option. It could placed in a distilled water, that is also a correct answer. So here the correct answer is all of the above. Jams and pickles do not spoil easily because bacteria get turgid? No. Bacteria get plasmolized? Yes. Bacteria get deplasmolized? गलत बात है. All condition may be possible, ये भी गलत है. In question number 7, label the parts. Root hair, label the parts. Part 1 is nucleus. So in C we have nucleus. Part 2 is cell wall, clearly visible है हमको, yes cell wall. And part 3 is root hair. So here the correct answer is C. Root hair is the extension of root. This is the epidermal cell, and epidermal cell का ये extension है. So this is the extension of epidermal cell. Epithelial cell बिल्कुल भी नहीं होगा because it is present in animal cell. Root cap का extension root hair नहीं होता है. Meristematic tissue तो यहाँ होते हैं, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल स्ट्रक्चर आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द प्लांट सेल. ओके, यानी कि सेल के बाहर और अंदर पानी के आदान प्रदान के लिए कौन सा स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल है? सेल वॉल एंड टोनोप्लास्ट. सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज टोनोप्लास्ट पर प्लस वैक्यूलर मेम्ब्रेन. बोथ आर द सेम थिंग. टोनोप्लास्ट प्लस सेल मेम्ब्रेन, इट कुड बी पॉसिबल, बट बिना सेल वॉल के तो कोई भी इन एंड आउट हो ही नहीं सकता. थर्ड इज सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सेल वॉल प्लस टोनोप्लास्ट नहीं लेंगे बिकॉज बिना सेल मेम्ब्रेन के भी नहीं होगा, सॉल्वेंट वही अलाउ करता है. द प्रोसेस इन विच वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल shrink away from its cell wall is known as, this is a plasmolysis. What is plasmolysis? Plasmolysis is a condition in a plant cell, in a living or a dead plant cell, when kept in hypertonic solution. The cell contents shrink from the cell wall, cell membrane shrink from the cell wall. That process is called plasmolysis.
So here the answer is C, and this one is also C. Very good. Question number 11. When a cell is plasmolized, it becomes flaccid and its turgor pressure becomes 0. It becomes turgid and its turgor pressure becomes 0. It becomes turgid and turgor pressure becomes equal to osmotic pressure, flaccid. So when a cell is plasmolized, तो flaccidity होती है, turgidity नहीं होती है. It is a result of exoosmosis. So B and C is absolutely wrong. फ्लैसीड एंड इट्स टर्गर प्रेशर बिकम ज़ीरो. टर्गर प्रेशर तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अब क्या है, उसका टर्गर प्रेशर खत्म हो गया, इसलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो गई. सो हियर द करेक्ट आंसर इज इट बिकम फ्लैसीड एंड टर्गर प्रेशर बिकम ज़ीरो. सो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए. सीड इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू इम्बाइबिशन. इम्बाइबिशन का कंडीशन क्या है? द प्लांट सेल कुड बी लिविंग और डेड. यस, सीड इज अ डेड living or dead part. It can absorb water by surface attraction. Yes, seed can absorb water by surface attraction. And the cell must be present in dry or semi-dry state. Yes, seed is present in a dry state. So I believe this is the correct answer. What phenomenon is intended to be shown by this experiment? Which limb of the YouTube contain more concentrated sugar solution, A or B? पहले तो हम प्रोसेस पता करते हैं. इम्बाइबिशन नहीं है, ऑस्मोसिस है. एंड क्वेश्चन है हमारा विच लिम्ब ऑफ द यूट्यूब कंटेन मोर कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड मीन्स गाढ़ा, जिसमें सुक्रोज का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कंसनट्रेशन कम है. सो दैट पार्ट इज पार्ट ए बिकॉज इट कंटेन 10% सुक्रोज सोल्यूशन and 90% water. In B, 5% sucrose solution and 95% is water. So here the correct answer is osmosis and the concentrated solution is present in A. So here the correct answer is part B. Okay. Guttation is the loss of impure water which is a result of high root pressure. Which of the following is the most acceptable theory for the movement of water through plants? This is the cohesive theory. When water is conducted through xylem, there are basically two forces. One is the force between the xylem vessel and the water molecule, and one is between the two water molecules. The identical force is called cohesive force, that is the force between the two water molecule, and the adhesive force, that is the force between the xylem vessel and वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ द एडेसिव फोर्स. यदि एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो वॉल से चिपक जाएगा. यदि कोहेसिव फोर्स होगा तो वो कंटिन्यूस चैनल बनाएगा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज कोहेसिव थ्योरी. अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल एक्सपैंड, बिकम मोर टर्जिड, बिकम मोर टर्जिड, बिकम लेस टर्जिड. सो हियर द आंसर इज, सॉरी बच्चों, here the correct answer is cohesive theory part A. एंड यहाँ पे डी पार्ट को काट देते हैं क्योंकि यदि हमने प्लांट सेल को प्योर वाटर में रखा है तो वो फूलेगी. इट बिकम टर्जिड. सो एक्सपेंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल रीचेस दैट ऑफ वाटर, बिकम मोर टर्जिड अंटिल द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द सेल रीचेस टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ये इसका करेक्ट आंसर है. In the given figure, chamber A and B are separated by a semi-permeable membrane. Study the given figure and choose the right options. Chamber A has higher water potential. Chamber no. And water will move from A to B? No. Chamber B has lower solute potential. B में solute potential कम है. Yes. Water will move from A to B? No. Water will move from B to A. C, chamber A has higher solute potential. Yes. And water will move from B to A. Yes. So here the correct answer is part C. Take the incorrect option about the osmosis. Osmosis is the movement of molecules from their higher to lower concentration. Flow of solvent molecules through SPM. Yes, solvent molecule move through semi-permeable membrane. It's unidirectional movement. Yes. It is a slow process. Yes. It is a fast process. No. The path of water from soil up to secondary xylem is, सबसे पहले water enter करता है soil water में.
देन इट एंटर इनटू रूट हेयर. सो हमारा फर्स्ट एंड ए और सी पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा. Then third is cortex. Yes, in both cases third is cortex. Then fourth is endodermis, xylem and phloem. Here phloem is no more. So here the correct answer is part A. Study the experiment shown below. After a few days, which of the following will have occurred? A level rise in level X and Y. So let me mark you which part is X. The bucket part is X and that retort is a Y part. Okay. So a rise in level X and Y, दोनों में ही किसी में पानी नहीं बढ़ेगा. ड्रॉप इन लेवल एक्स एंड वाई, दोनों में से लेवल नहीं घटेगा. अ राइज इन लेवल एक्स से तो खाना लेके जाएगा. सो ड्रॉप इन लेवल एक्स एंड राइज इन लेवल वाई. So this is all I want to discuss for today. Practice these questions. I will share the PDF of these questions in your classroom. Till then, take care. Goodbye.